The Chief Minister designate shall now be invited to the dais to take the oaths of the office and of secrecy as Chief Minister for the state of Assam. Shri Himanta Biswa Sharma, Chief Minister designate. You may be pleased, sir, to administer the oath of office and the oath of secrecy to the Chief Minister designate as invited and presented. মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্যতা পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ ৰাখিম। মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্য বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তঃকৰণেৰে সম্পাদন কৰিম আৰু মই ভয় বা পক্ষপাত অনুৰাগ বা বিদ্বেষ নোহোৱাকৈ সংবিধান আৰু আইন অনুসাৰে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ কৰিম। মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ কৰ্তব্যৰ যথাযথ সম্পাদনৰ বাবে আৱশ্যক হোৱাৰ বাহিৰে মই এনে বিষয় যি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰ বিবেচনাৰ বাবে অনা হ'ব বা মোৰ জ্ঞাত হ'ব তেনে বিষয় মই কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসকলৰ ওচৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে অৱগত বা প্ৰকাশ নকৰিম। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है। दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने हैं। 1988 में असम के कॉटन कॉलेज के मुख्य सचिव बने। 1992 तक इस पद पर रहे। 2001 में पहली बार झालुकबाड़ी से विधायक बने। 2002 में असम की कांग्रेस सरकार में पहली बार मंत्री बने। 2011 में लगातार तरुण गोगोई की तीसरी सरकार में मंत्री बने और 2015 में सीएम ना बनने पर कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और यहीं से हिमंता बिस्वा शर्मा की एक अलग राजनीति की तस्वीर देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर हिमंता असम के मुख्यमंत्री बने और दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बन चुके हैं। उनकी पॉपुलैरिटी ऐसी है कि अपनी सीट से अपने प्रतिद्वंदी कैंडिडेट को 89,000 वोटों से हराया है हिमंता। The ministers designate are present.